Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I'm Shashi Dhar, your host, and today what we are going to discuss is Sacral Chakra healing. To just give you a little bit of a background, we have been talking of the 7 major chakras, and we did an overview of the Pranamaya Kosh and all the chakras and all the nadis in the Pranamaya Kosh. And last session we talked about root chakra healing. Now, root chakra is the first major chakra, and that is fundamental for our existence. So we covered that in the last session. So if somebody has not attended the last session or not watched the recording, I would invite you to go ahead and watch the recording. It is available in the YouTube. I can send you the recording. In case you can send you a number, you will get the recording on your WhatsApp, and you can watch that, practice that, and then see what difference it makes in your life. And today, going forward in the same session, in the same sequence, what we're going to do is the sacral chakra healing. Now, sacral chakra healing is the second major chakra from the bottom. That means root chakra is at the end of the spine, and sacral chakra is just above the root chakra, below the navel. That is the location. So front and back chakra. So front chakra is also, front body में भी है, back body से भी आप उसको access कर सकते हैं. So sacral chakra is just below the navel. That's how you can look at the position of the sacral chakra. Now, sacral chakra is also called the Swadhisthana chakra. That is the language used in the scriptures. So, Swadhisthana chakra or sacral chakra is the second major chakra from the bottom. So, we are starting from the lowest chakra. The major chakras में जो 7 हैं, सबसे पहला root chakra Mooladhara. Second is the sacral chakra Swadhisthana. Correct? So, that's what we are going to discuss today. Now, we know the location. Now, the healed color of the sacral chakra is orange. So, orange is the healed color of the sacral chakra. Chakra, if you are not clear what it is an energy wheel in the Pranamaya Kosh. As you breathe in, the Prana Shakti and the oxygen goes in along with your breath. And these energy wheels, they rotate clockwise and anti-clockwise and coordinate between the body and the mind. So, that is how the energy is flown into your body and mind, and that keeps you alive. Correct? So breath is important. So Pranamaya Kosh is also called the breath body, or the energy body, or the vital body. Correct? Because the vital Prana Shakti or the Prana force flows through the Pranamaya Kosh and connects the body and mind. That is, in short, the summarization of the Pranamaya Kosh. Now, when we talk of sacral chakra, like we did in the root chakra, location just below the navel, healed color is orange. Then it is connected with the water element. Root chakra we all saw, it was the earth element, right? So sacral chakra is about the water element, and water element being the element which is in flow, so it also connects with the mind. So ये mind का पूरा control sacral chakra से होता है. It is the creative center. So sacral chakra is the creative center, so it takes care of the creativity in your life. It is also the pleasure center. So it takes care of all the pleasures in your life. So whatever pleasure you can think of, yeah. So family life, married life, and you can think of all the luxuries in your life, right? Relationships, then luxurious lifestyle. So all these will be part of the sacral chakra. So if the sacral chakra is healed, you will enjoy the pleasures of life. And if there are blocks in the sacral chakra, then you will have struggle in getting or enjoying the pleasures of life, right? And what are these blocks? These blocks are emotions of root chakra. We saw the emotion was primarily fear. Here it will be fear, but related to relationships, related to, you can say, blocks will be not only fear, it will be emotion of guilt, shame, embarrassment, hurt. So all these are very, very dominant emotions, negative emotions, which create karmic blocks in your sacral chakra, right? So sacral chakra takes care of all the relationships in your life. तो अगर sacral chakra में blocks हैं, आपके relationships में problem होनी ही है. So when a healer comes and tells me I have major problem in relationships, oh, I know the sacral chakra is gone for a toss. It is completely blocked. So that is how we correlate how the life situations can tell us what are the condition
of the major chakras, right? Now, further, as we say, sacral chakra, we will talk of the Beej mantra a bit later, or I can just mention it. The Beej mantra which governs the sacral chakra is Vam. So, like in root chakra, the Beej mantra was Lam, correct? So, the Beej mantra for the sacral chakra is Vam. So, Vam, Vam, Vam. That is how you chant. You can find these recordings. Amit ji has already posted that in the group, right? Otherwise, you can find that in the YouTube. You just search in the YouTube, Google search, or there are so many videos here. 3 minutes for each chakra, so 7 chakras can be covered in the 21 minutes of mantra chanting. So you will get these mantras where the Beej mantra is repeated for 3 months, or 3 minutes, correct? So the Beej mantra is Vam. Now it also takes care of one action organ and one sense organ, like we saw in the root chakra, correct? Anybody who can tell me what is the action organ and the sense organ for the root chakra? किसी को याद है या मालूम है? Okay, so root chakra basically taking care of the earth element. The sense organ is the smell, correct? And the motor organ or the action organ is the excretory organ. So in the same vein, in the sacral chakra, the sense organ is the taste. Okay, so इसमें smell हो गया, taste हो गया, इसका taste आता है. And the action organ is the reproductive organ. Yeah, because that is the center of sacral chakra is the reproductive system. So it takes care of the reproductive system, and the action organ is the reproductive organ. So all the issues, अगर sacral chakra में blocks होंगे, so all the issues related to, you can say, in the whole process of reproductive system. So reproduction में problem है, parenting में problem आएगी उसमें. So you can think of all the problems that you people have because of the sacral chakra blocks, correct? But ideally, you can connect with it as the center of creativity and center of pleasures. So these are the two major, you can say, responsibility of actions in the sacral chakra, correct? Right. Anything else, Amit ji, you want to add before we move on with the healing modality? No, not really add. I think you've covered pretty much. Or I think ये भी सब याद में रख पाना भी will be a good achievement if somebody all can remember this. Yeah, but I think I will just go for demo whenever. I think let's ask some questions in case people have. So we will very soon go into the healing modality, which will be about a 5 minutes process that Amit ji will take you through, correct? But before that, let me also tell you, if there are blocks in the sacral chakra, then what can be the way out? I mean, what you can actually try to do in your lifestyle basis. Lifestyle में क्या changes कर सकते हो आप, जिससे कि आपके sacral chakra में के blocks जो हैं वो हट जाए. Healing modality तो है ही है. One is like I say in the healers program, we teach the healers modalities, right? That is one way. Second is what Amit ji is going to tell us very soon. Just like the root chakra, the whole process of how we can heal the sacral chakra, correct? But besides that, there are some ways how you can heal that very easily in your normal daily routine, right? तो जैसे हमने रूट चक्रा के लिए कहा था, अर्थिंग बहुत जरूरी है, तो वॉकिंग बेयर फीट ऑन द ग्राउंड इज वेरी वेरी पावरफुल. सिमिलरली, सिंस इट इज वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट में आप क्या कर सकते हो? हमारा बॉडी 70% से ऊपर तो वाटर है. तो आप जो पानी पीते हो उसको अगर आप किसी कंटेनर में स्टोर करते हो, नॉर्मली करते हैं हम लोग, आरओ का पानी होता है घर में, कंटेनर होता है जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं, या घड़े का पानी पी रहे हैं, राइट, या बोतल में पानी है, तो यू कैन chant this mantra because water absorbs the mantra energy is very fast, right? And then, or you can check, you can play the Om mantra or the Gayatri mantra in your home, and that vibration will heal the water. Once the water is healed, then you drink that water, it will have a very good impact on your
system, right? Then सुबह सुबह उठ के अगर आप पौधों को पानी दे रहे हैं या सूर्य को जल दे रहे हैं, this is a very very powerful way to heal your water element, right? And water element, since it is in the flow, it should never be stinking, or it should not be somewhere stationary, क्योंकि स्टेशनरी पानी होगा तो वो खराब होगा, वो स्टिंग करेगा. तो पानी हमेशा फ्लो होना चाहिए. एंड इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द इमोशंस इन योर माइंड शुड ऑल्सो बी फ्लोइंग. तो किसी इमोशन को पकड़ के नहीं रखना. लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिव इमोशंस. लिसन टू द मंत्रास, listen to the chantings, whatever you want to do, you can do that, but release the emotions and keep the emotions in flow. So keeping a fountain in the north direction of the house is also very very powerful way to heal your water element or the sacral chakra, right? तो ये कुछ तरीके हैं जो नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो, जिसमें कोई मेडिटेशन में नहीं बैठना है, जिसमें सिर्फ थोड़ी सी चीजें याद रखनी है जिससे कि आप अपने सिस्टम के वाटर एलिमेंट को आप हील कर सकते हो. क्लियर है? एनीबडी हु हैज एनी क्वेश्चंस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. So while drinking water, what is saying in beej mantra of sacral? Beej mantra, om mantra, gayatri mantra, mrityunjay mantra, any mantra will empower that water. Okay. And then you can drink that water or use that water for cooking your food. So that will be a very powerful way to heal not only yourself but for all the family members. Yes, because water absorbs the energy very fast. I think that's a very and a lot more can happen through water. We've read a bit of here and there, but I think this is a very good reminder and perhaps an opening for me also that how to use water for sacral. Nice. Thank you for reminding. Yes. Thank you. And these are very simple things. अब आप बोलो कि मेरे को मेडिटेशन नहीं करना आता, मैं नहीं कर सकता मेडिटेशन, मेरे को हीलर प्रोग्राम सीखने के लिए इतना टाइम भी नहीं है. तो these are very simple things that you can do, right? Ideally, तो you should do that method which Avij is going to now tell you. तो 5 मिनट का है ये. अगर आप ये रोज 5 मिनट करेंगे तो आधे घंटे में आप अपने सारे 7 चक्रास को हील कर सकते हैं, right? But first understand and then go ahead with all the 7 major chakras healing. It is definitely bound to impact your life. क्योंकि इसको लगता है कि इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, इसी से आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इम्पैक्टेड बाय द लोअर 3 चक्रास. अगर आप मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में उलझे हुए हैं, तो अगर कोई सर्वाइवल इशू है, अगर आप फियर से जूझ रहे हैं, शेम, गिल्ट, ग्रीड, हर्ट, इन सब इमोशंस में दबे हुए हैं, तो आपके सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा और सोलर चक्रा में बहुत ब्लॉक्स हैं. और ये इस जन्म के नहीं है, कई जन्मों के. तो better start healing as soon as possible so that at least you have a good start. एक बार start हो जाएगा, then the process becomes easier later on. Yes. Okay. Now, without any further delay, let me first invite Amit ji. And thank you. You make me co-host, please. Yes. And yes. welcome Ankit. Welcome Ankit Mishra bhai. And welcome P. I don't know, Mr. P, Miss P. If you could name your name completely, that'll be nice. It is always good to connect. Yes, Amit ji, over to you now. You can carry on. Yeah. So you made me co-host. You made me host, right? Okay. And I also need to make sure this time that my audio of the YouTube is functioning completely. And for that, I need to do something in my sharing, right? Yeah, when you're sharing that, just tick on the sound. Yeah, advanced sharing options. Okay, participant. What I'm sharing, share sound. Yeah, okay, okay. And just look at me. If I'm saying like this, that means the sound is not coming. Okay. Sure. If it is this, thumbs up, then it is coming. Yeah. Sure. Great. So I think I want to just remind certain thing which we spoke about last time. जैसे कि मैंने कहा, I think हम 3-4 लोग आप में से नहीं आए थे last time. शायद 2 बार से नहीं आए थे. So
mostly I think Shashi sir has included everything about this chakra, sacral chakra. इनको इंग्लिश में वेस्टर्न वर्ड में एनर्जी सेंटर्स भी बोल देते हैं. So so there are three aspects to energy center. One is cause, another is effect, and the third is how to heal. So something causes certain disturbance in any of the chakra. That is called cause. I will talk about cause as well. Then second is what is the effect? अगर वो चक्र ब्लॉक या हिल जाता है तो what is the effect? And third is उसको heal कैसे करना है? अब now I personally practiced, as I mentioned last time also, दो pranic healing certificate course मैंने recently किया last year. But before that, my own research in the last 6-7 years, and I went to Himalayas also, वहाँ भी सीखा. So cause, effect, and healing कैसे करते हैं? तो पहली बात cause क्या है? Very crisply. So though we will find that the various causes, but I think very one word, single word cause because of which our sacral chakra gets blocked is guilt or and also shame. Yeah. So अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया और हमें पता है कि हमने दुख पहुंचाया तो वो गिल्ट है. इससे पहले जब मैं लास्ट वीक रूट चक्रा की बात करी थी, दैट वाज उसके उसके ब्लॉकिंग होने का रीजन था फियर. ना फियर और गिल्ट अलग अलग इमोशंस है. फियर वो होता है जब हमने किसी को फॉर एग्जाम्पल हमने जान के दुख पहुंचाया और हमको ठीक लगता है कि हमने ठीक उसके साथ ऐसा किया, जैसे हमने किसी को पीट दिया फॉर एग्जाम्पल, और हमको अच्छा लगा कि हमने उसको पीट दिया, लेकिन अब डर लग रहा है, तो दैट इज फियर. तो उसमें रूट चक्र ब्लॉक हो जाएगा. गिल्ट हो गया जिसमें कि हमको करने के बाद पता लगा कि गलत किया था, या फिर शेयर. ये बाकी इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, 4-5 और इमोशन समझ में आएंगे, प्राइमरली दिस. ये तो हो गया कॉज. अब इफेक्ट क्या है? क्रिस्पली स्पीकिंग इफेक्ट होते हैं दो. हमारी क्रिएटिविटी और प्लेजर्स गो डाउन. खुद सोचेंगे अगर हम किसी गिल्ट में है ओवर पीरियड ऑफ मेनी डेज, वीक्स और मंथ्स और ईयर्स, हमारी क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी, क्रिएटिव आइडियाज नहीं निकल पाएंगे हमसे, और लाइफ में प्लेजर भी नहीं होगा अगर हमें गिल्ट है तो. अब एक मर्डरर है, उसने मर्डर किया पर गिल्ट नहीं है, तो ही कैन एंजॉय प्लेजर. पर अगर गिल्ट है तो प्लेजर नहीं हो सकता. तो ये तो दो बातें. अब तीसरा, हील कैसे करना है? हील करने के लिए बहुत सारी मोडालिटीज हैं. शशि सर ने कहा जैसे अभी पानी का हो गया, और एक दो चीजें और बताई शशि सर ने जो मुझे, देयर इज सो मच. आई थिंक टुडे इफ यू गूगल आप हर एक चक्र को हील करने के लिए कम से कम 10 टूल्स तो आपको दिखेंगे, मिलेंगे. और अपने as per your convenience, as per whatever is suiting you, we can pick up 1 or 2 or 3 or many tools or medicines, if I can call it medicines, like tools, to balance this chakra, to clean this chakra. Now, ये क्लींजिंग हम वर्ड यूज करते हैं, मैं तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि व्हाई डू वी यूज अ वर्ड क्लेंजिंग. अल्टीमेटली इट्स ऑल हीलिंग, बट अगर हम विजुअलाइज करें हाउ डू चक्रास वर्क एंड बिहेव. सो दीज आर सीव्स. हमारी बॉडी में जो 7 चक्र है, ये सीव्स यानी कि छलनी, जैसे चाय की छलनी होती है. जब हम सांस लेते हैं, हमारी एनर्जी अपार्ट फ्रॉम द एयर और ब्रेथ, हम ची यानी कि लाइफ एनर्जी यानी कि प्राण भी अंदर लेते हैं. अब वो प्राण है, दे गो थ्रू वेरियस वेसल्स जिनको हम नाड़ीज बोलते हैं, एंड दोज नाड़ीज स्प्रेड द एनर्जी और प्राणा इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड दीज चक्रास जो कि छलनियां है, सीव है, मैश सिस्टम है, वो अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो एनर्जी का फ्लो पूरा नहीं हो पाएगा. तो वो उनको अनब्लॉक करने के लिए, क्लींस करने के लिए ये एक्टिविटीज जरूरी है, जिनके बारे में अब हम वेरी स्पेसिफिकली बात करेंगे. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Okay, so now there are 5 very quick and easy to apply methods which I figured, which are there on internet here and there. कई सारे जैसे कि मैंने कहा, बट मेरे को 4-5 ऐसे समझ में आए जो कि इजी टू अप्लाई है इन वन सिंगल सेटिंग और वन सिंगल सेशन, जिनको मैंने शॉर्ट में लिखा है, नाम रखा है उनका छम, CHAMM. C stands for color, H stands for hand mudra, A stands for affirmation, M stands for music, and another M stands for mantra यानी कि बीज मंत्र. So I repeat: color, affirmations, music, color, hand mudra, affirmations, music, and mantra. Every chakra has a specific cham to it. Last week हमने पढ़ा, for example, root chakra का cham है, color is red, एक hand mudra specific जो online में नहीं दिखा सकता हूँ. Affirmation है कि I am safe, I am healthy, I am stable. उसका एक साउंड फ्रीक्वेंसी हमें पीछे से यूट्यूब पे सुनना पड़ता है, जो कि यूजली 100 हर्ट्ज के आसपास है. एंड लास्टली बीज मंत्र जो कि लम है, LAM. नाउ सेक्रल चक्र, जिसका नाम स्वादिष्ठाना भी है,
इसका भी एक स्पेसिफिक छम है. सो कलर इज ऑरेंज. एक एच एक हैंड मुद्रा है. एम सॉरी ए फॉर एफर्मेशन, इसका एक एफर्मेशन है जो कि है आई एम क्रिएटिव एंड आई एम फुल ऑफ प्लेजर्स. हम इस बारे में और भी डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान आई विल टॉक मोर अबाउट दैट. और इसकी एक साउंड फ्रीक्वेंसी अब हम यूट्यूब पे सुनेंगे जो कि यूजली अबाउट 200 हर्ट्ज के आसपास है, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन टू इफेक्ट दिस चक्र और एनर्जी सेंटर टू बेटर आवर क्रिएटिविटी एंड प्लेजर. एंड लास्ट में है इसका बीज मंत्र विच इज वम, VAM. तो हम पांचों चीजों को एक साथ कैसे लगाएं. एंड ये जैसे कि हमको ये भी सोचना है कि इसमें बहुत ज्यादा अगर हम डीप नहीं भी जाते हैं, पर हम पांच चीजों को कंज्यूम करते हैं. लाइक मेडिसिन, यू टेक मेडिसिन एंड यू इट्स ओके, यू डोंट हैव टू रियली से दैट काश मेरा बुखार उतर जाए, काश आई बिकम आउट ऑफ फीवर. So that's a lot of work, but here in this case, chum are like 5 medicines, and if you take this, Karma, you can go on mute or whatever. If you have a question, okay. So we'll start the demo now. I will share the screen. एक सेकंड के लिए मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा कि these are some good charts, some plexus. Is my screen visible? Is my screen visible to everyone? मुझे वीडियो किसी का दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं एक शेयरिंग स्क्रीन पे हूँ. Can somebody speak? Yes, your screen is visible, Amit. Sure. ठीक है. So this, if you can see my cursor also moving, this is the location of all the 7 chakras, and आज हम इसकी बात करेंगे, which is energy center 2, sacral plexus. Yeah. Okay. Stopping this and now sharing the YouTube window. Hi, where are you? How I'm not able to see my own You have to YouTube share video. again. You will Yeah, have to I share have to the video share again. again. Yeah. Yeah, I have to, but why it is not displaying my YouTube? Yeah, I think it's there. Visible now? Is it? Can you see a screen share now? Yes. Okay. So, Yes. so we will start. We will spend about 5 minutes in demonstration. Slowly, I will request to just bring your awareness to wherever you are. Kindly stop thinking even Is out the things music out. on? Is the music on? No, We can't hear. no, we have not started the music. Okay. Yeah. So I will tell you, I will ask you that is my music audible or not. So currently, I think let's bring the awareness to your own self, your own body. Slowly close eyes, and let's take 2 or 3 deep breaths so that we come back to this moment and be aware of this moment. Just take a couple of breaths, please, long as possible. So I'm going to play this YouTube video. You have to pay attention to the sound, the very sound, which has a sound frequency of roughly 200 hertz. And I will keep guiding you. मैं बीच-बीच में आपका ध्यान वापस लाता रहूंगा because ध्यान जाता है इधर-उधर. And I will request you to start visualizing. To begin with, start visualizing the location of the sacral chakra, which is, as we know, it's just below the navel, but behind the navel. Imagine a ball which is as small or as big as a lawn tennis ball, which is orange in color, not hot, but it is an energy ball and slowly rotating. Just bring your attention, spend few seconds, and then I'm going to start the video now. There is the audio audible. No, Amit ji, I can't hear. Okay, audio is not audible, but you can see the screen, right? Yes. Yes, screen is visible, but I can't hear. Yeah, we can't hear. The screen is visible. And there's a chat. Okay.
What can I do about this now? So shall I stop and share again? I can just do this last effort, otherwise. Otherwise, you can tell the procedure and share the link in the group. Yeah. Share the YouTube link in the group. People can listen to it later. Now? Now it is there. Yeah. Okay, so sorry for this interruption. Bring back the attention, close the eyes, bring your awareness to the sacral chakra's location. Please think of an orange ball, lightly warm, and start listening to the sound, which is sound frequency. Scientifically proven, the vibrations of this sound, which is coming from this YouTube channel, though it's an external help, it does magic. So color orange, and then start chanting along with me. And the chant is VAM, VAM. It's also okay that you don't have to recite along with the chant of this person, so we can start chanting anytime, start and end chanting anytime. अगर echo साथ में हो जाए मिल जाए तो बहुत अच्छा. And this is a demonstration. You will not perhaps find the result, but it's a demonstration. We have to do this at home after this session, in silence and isolation. Yeah. So affirmations साथ में बोलेंगे. The affirmation for sacral chakra is, I am full of creativity and I am full of pleasures. Briefly, these two, otherwise so many. So let's focus on the breath once now. I'll stop talking and just follow me. Because it's a demonstration, I'm going to go very quick. Please tell yourself that you're creative and you're full of pleasures while continuing to focus on the chakra's location. So we paid attention to the color orange. We have paid attention to the affirmation. And while we're chanting, we're already paying the attention to the Bij mantra, which is VAM. And whenever possible, pay attention to the incoming sound from the device, electronic device. Just this sound is different and the chanting is different. These are two different elements to this music that you're listening to right now. Yeah. So paying attention to these four elements with intention, even if I sit for half an hour every day, this brings noticeable results within 1 month max. Yeah. So I will stop talking for next 2 minutes. Please pay attention. Please tell yourself that you're creative and full of pleasures, and you will find that yes, it will work when you will sit alone and do it properly.
Full of creativity, and I'm full of pleasures. Or I have the power to be extremely creative, and I have the power to feel all the pleasures of life. So I will slowly let this fade away. This music can go on and on and on. And this is how, when we sit for a little longer time, that's the time we will find results. And let me also tell you, in between the breath, so maybe we can talk about this in some of the sessions some of the time, in between the breath, when we hold the breath, लंबा सांस लेना या छोड़ने के बाद जो ब्रेक लेते हैं, that's called an implementation stage, where when we put a desire or intention forward, then there is a strong chances that during that time when the breath is, you're not breathing, you have held onto the breath, आपने सांस रोक ली है, तो उस समय कुछ अगर आप डिजायर करते हैं तो उसके चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा to accomplish. So it's a big different science. We'll talk about this some other time, but it is a part of the chakra meditation as well. Great. I will stop sharing now. Any question? It's a demonstration. 5 things together. हैंड मुद्रा में ऑनलाइन नहीं सिखा सकता हूँ, तो 4 चीजों की बात करी अपने, कलर, एफर्मेशंस, म्यूजिक एंड मंत्र. जब इसको आप करेंगे, मैं म्यूजिक लिंक दोबारा से भेज दूंगा, जब आप इसको करेंगे इवन अल्टरनेट डेज पे फॉर हाफ एन आवर, more the merrier, then you will find results. Not right now. 5 minutes की demonstration में तो एकाग्रता भी नहीं आती, concentration भी होना मुश्किल है, unless somebody is as a proficient like Shashi Dhar ji. ये बता रहे थे, हम last time बात कर रहे थे that it happens very quickly with him, but when I take a lot of time, शुरू में thoughts आते हैं, आने दीजिए, कोई बात नहीं, पर वो thoughts आके थक जाएंगे, fatigue हो जाएंगे, and slowly after half an hour of session, you will find that most of the thoughts have stopped, they've got fatigue, थक गए हैं, stop thoughts भी आ करके, and then the real fun benefit starts. Any question? या तो कुछ भी समझ में नहीं आया या बहुत ज्यादा समझ आ गया है. Okay, great. So I think that's pretty much. इसको घर में कीजिए. In case you have a question, feel free to call me. Briefly, chum is a technique जो कि combination में मैं suggest करता हूँ लोगों को use करना, और मैंने कुछ नहीं बनाया. It is all there on various platforms. A lot of gurus and facilitators and internet is talking about these individual ingredients. कोई color पे ज्यादा focus करता है, कोई hand mudra पे, कोई affirmation पे, कोई music पे, कोई mantra पे, और जैसे elements है, जैसे सर ने बताया water है इसका, पर जो मुझे 4-5 समझ में आया जो बहुत effective लगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, which is usually achievable because पानी को कितना याद रखेंगे कि हर बार, I mean it needs to be in the practice. अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट जब सेशन में जब अपने आप को एक लिए आधा पौना 1 घंटा निकाल के बैठे. Yes, भाई, you have a question. Okay, great. First, Amit ji, it was a wonderful demonstration. Let's acknowledge Amit ji. Very good. And I'm sure people will participate and practice this, and definitely they will get the benefits from it. Yes, Aman ji, you want to ask something? I have just one question or rather
some validation. I heard that, orange is a very powerful color in the sense that whosoever wears the orange color, it basically neutralizes the person. So in a sense that, his energies are balanced wearing the orange color. So, I mean, now I can relate why, the sacral chakra color is orange and, what is the relation between these? How correct is this statement, sir? See, the sacral chakra healed color is orange. So when you're wearing orange or when you're thinking of orange, you are healing your sacral chakra. That is the scientific aspect of it. Or actually, that is what is happening. Now, if somebody, after healing the sacral chakra, can create magical results in his life, it will be a great, wonderful impact in his life, right? So it can impact your creativity. So just imagine if your creativity goes up by 50%. I'm not saying 100%, 50%. How would your life be? Our life is all centered about pleasures, right? The three W's. I don't want to name that, but if you know the three W's, that is pleasure center. Yeah. If you are living a married life, you are looking for pleasures, correct? If you're looking for a great relationship in life, leave that husband-wife relationship. Your whole relationships with all the people in your life is governed by the sacral chakra. How would your life be if all the relationships are healed? If you're free from all the negative emotions of shame, guilt, hurt, blame, see how you are. See how you are. Vipulji, Vipulji, you need to go on mute. Amit ji, mute पे करिए उनको. I don't know how to mute a particular. Okay, I am becoming the host now. Hold on. Yeah, please. Vipulji, maybe you can introduce yourself. Hi. Anji. How do I एक मिनट हाँ जी विपुल जी बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ पर सर आपने उनको म्यूट कर दिया maybe you can unmute him he was maybe introducing himself Yeah, you can unmute himself. okay जिनको शेयर करना है वो अनम्यूट करेंगे उसके बाद वापस म्यूट पे चले जाएंगे yeah yes okay so first of all whatever Amit ji has told us about the process, how many of you are committed that we're going to do that? Let me see a show of hands. Okay, no, very good, Daksh. And all the others, yes. Aman Khanna ji, yes. Tarun, yes. Okay, so this practice has to be done. Okay, so we have learned about the two major chakras, root chakra and sacral chakra. And trust me, 90% of the problems in your life will be taken care by these two. And another one which you're going to do the next, solar chakra. ये तीन चक्रास को अगर आप प्रॉपर तरीके से हीलिंग करेंगे आपके 90% लाइफ की प्रॉब्लम्स यहीं पे हैं क्योंकि लोअर थ्री चक्रास आर गवर्न बाय योर ईगो और हर एक में जो ईगो होता है वो कहीं ना कहीं इन तीनों चक्रास में ब्लॉक्स क्रिएट करता ही है जहाँ पे भी नेगेटिव इमोशंस आएंगे वो सब आपके इन तीनों चक्रास में ब्लॉक्स आएंगे एंड सम ऑफ द एक्शंस यू माइट बी रिमेंबरिंग इन दिस लाइफ टाइम बट मोस्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ ऑल योर लाइफ टाइम्स यू डोंट रिमेंबर they are also present in your blocks. उनकी वजह से जो कर्म आपने पिछले जन्मों में किए हैं उनके ब्लॉक्स भी आपके चक्रास में प्रेजेंट हैं और वो ब्लॉक्स भी हैं तो आपको कई चीजें मालूम नहीं होंगी. यू मे थिंक कि आपने आज इस जन्म में तो किसी को कुछ नहीं मारा, पिछले जन्म में बहुत वायलेंस किया होगा आपने और उसका रेज और एंगर वो सब आपके चित्त में इम्प्रिंटेड है और वो चक्रास में ब्लॉक्स की तरह पड़े हुए हैं और जिनके साथ ये हुआ है वो इस जन्म में आके आपको रिटर्न गिफ्ट वापस देंगे. तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट. करेक्ट. फॉर दैट it will be easy for you if you heal these chakras and learn how to contribute and forgive people in your life. That will come later on as we move on to the heart chakra. Correct. So this is very, very powerful and it is directly going to impact your life. Right. This is cause and effect. इसमें कोई मैजिक नहीं है एक्चुअली. So if you do the healing process perfectly, you will see your quality of life going up in a big way. So we should all practice that. Very good. Yes. Now I'll take some questions. विपुल जी कुछ बोलना चाह रहे थे, अनम्यूट करके बोल सकते हैं. Okay. Anybody else?
Anybody else who has? It's all good. Yes, Vipul. Okay, all good. Okay. All right. Anybody else who has any questions? Yes, Aman Khanna ji. Shashi sir, I heard somebody saying कि अगर आप अपने काम वाले जगह पर पानी का गिलास रखते हैं तो उससे आपका काफी माइंड स्टेबल होता है. Yes, we saw that माइंड नहीं, we मैं saw that बोलूंगा connection, correct? मन. हाँ, तो मन बोला था उन्होंने. मन आपका बहुत शांत हो जाता है उससे. Yes. उसका क्या कनेक्शन है सर? See, कनेक्शन ये है, आप देख रहे हैं जब लो टाइड या हाई टाइड होता है मून की वजह से, तो क्या होता है पानी में फर्क आता है ना, राइट? नाउ राइट, मून is impacting the mind, ठीक है? बिकॉज बॉडी में जो 70% हमारे वाटर है, इमोशंस मेजरली इज सीन एज द फ्लो ऑफ वाटर. तो इमोशंस फ्लो होते हैं, वाटर फ्लो होता है, तो वाटर एलिमेंट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इमोशंस, करेक्ट? एंड जैसे मून का इफेक्ट होता है पानी पे, वैसे ही इमोशंस आपके ऊपर नीचे जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेक्रल चक्रा ब्लॉक्स. नाउ व्हेन यू आर कीपिंग ए वाटर देयर, और वाटर को अगर आप पावरफुली एम्पावर करते हो किसी भी मंत्र से और वो पानी पीते हो, तो पीने का पानी बोल रहे हैं ना, टेबल पे पीने का पानी रखते हैं और वो पीते हैं धीरे धीरे, दैट्स व्हाट यू सेइंग, करेक्ट? तो उससे क्या हो रहा है, एम्पावर्ड पानी ले रहे हो आप, जिसमें मंत्र आ रहे हैं या कोई ब्लेसिंग्स आई हुई हैं, या किसी का जैसे गंगा जल भी अगर हो तो उसको पुण्य मतलब बहुत पवित्र मान के आप उसको पानी पी रहे हैं, तो दैट विल एम्पावर. आप कोई भी मंत्र घर पे लगा लीजिए, आपके पानी में इफेक्ट आता ही है, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. इसलिए इमोशंस, मन जो बोल रहे हैं वो इमोशंस को बोल रहे हैं, तो आपके इमोशंस स्टेबल हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस निकल जाते हैं और पॉजिटिव इमोशंस की तरफ आपकी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. दैट इज व्हाट यू नीड टू लुक एट. तो इट इज ट्रू, वेरी ट्रू, विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ऑल्सो, कि आप घर में अपने जो पीने का पानी रखते हैं उसको घर में मंत्र चलाइए, वो पानी ऑब्जॉर्व कर लेगा. वो मंत्र आपको सुनाई दे या ना दे, किचन में आरओ पानी जहाँ रखा हुआ है वो मंत्र को हमेशा एब्जॉर्ब करता है. तो घर में गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ओम मंत्र, ये सब लगाइए, ये आपको भी असर करेगा और पानी को भी असर करेगा, और वो पानी तो सारे घर वाले पी रहे हैं, इट विल इम्पैक्ट एवरीबडी. यस, थैंक यू. सो अमन जी, डिड यू गेट द आंसर? यस सर, थैंक यू सो मच. वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज अमन जी. यस, एनीबडी एल्स? Anybody else who has any question? So we have learned two techniques, not two techniques, one technique to heal 2 chakras now. Okay. So my invitation to all of you is do this for 1 week. एक हफ्ते रोज करिए इसे and see what difference it is making. Observe the difference that it is making in your life. And I'm sure if you observe, अगर आप keenly observe करते हैं, कुछ ना कुछ फर्क जरूर नजर आएगा. नेगेटिव इमोशंस थोड़े कम हो जाएंगे और पॉजिटिव इमोशंस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे, करेक्ट? और नेगेटिव इमोशंस कम होने का मतलब ये है, या तो इमोशंस कम हो जाएंगे, उनकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. तो लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड आई एम श्योर दिस इज हाउ आई हैव नोटिस्ड द प्रोग्रेस इन माई लाइफ whenever I was doing healing or doing these mantras and doing any healing modality, it would impact the reduction of the negative energies in me. तो उनके फ्रीक्वेंसी, उनके ड्यूरेशन और उनका इम्पैक्ट तीनों कम हो जाता था. एंड दैट इज हाउ यू नो इट इज गोइंग टू impact your life. Yes, all right, good. Anybody else who has any question? Yes, Amiji. So I want to add something beyond this. So sometimes you will feel कि हम ये छम लगा रहे हैं, कलर, हैंड मुद्रा, या फिर हैंड मुद्रा नहीं है तो कलर, एफर्मेशन, म्यूजिक एंड मंत्रा. It may sound look like it's becoming complex. कभी आप कलर सोच रहे हैं, कभी कुछ एक्सटर्नल थॉट दिमाग में आ रहा है, फिर कभी एफर्मेशंस बोलनी पड़ रही है, कभी म्यूजिक पे फोकस करना पड़ रहा है, कभी कलर्स. इट मे सो हैपन, या, एंड इट मे आल्सो हैपन कि आफ्टर 1 session, even 5 sessions, you will find, यार,
it's too much to do. It's like a khichdi, but at the same time, there are 2 points here. Even if we'll end up spending all this time, which may look like an effort or a struggle with no clear evident result, if you think so. Yeah. Let me tell you here. So even if we're doing it in the not in the best possible form in the first few 2, 3, 4 sessions, उन पे ध्यान देने से, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर चक्र पे ध्यान दे रहे होंगे उस समय, उस ध्यान देने से ही बहुत फर्क आ जाएगा. इवन इफ you're not applying the best of the color therapy, best of the hand mudra, best of the music, best of the बीज मंत्र, क्योंकि हम सबको एक और हमारी अंतरात्मा को एक बात पता है कि जिस पे देते हैं ध्यान वो देती है अपना ज्ञान. तो हम इस ध्यान से भी बैठ गए ना 15 मिनट या 45 मिनट वट एवर ड्यूरेशन, कि हम सेक्रल चक्र के पीछे पड़े हुए हैं. हमने बार बार उसके लिए ऑरेंज कलर सोचा, हमने उसके लिए फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक सुना, हमने बोला कि हम क्रिएटिव एंड हम प्लेजर, तो लगेगा कि ये मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा है. तो सिर्फ ध्यान देने से भी that particular thing gets affected, which is sacral chakra in this example particularly. So मैं ये बोलूंगा कि फर्क पड़ेगा, 1-2 बार लगेगा कैलिब्रेट होने में, फिर खुद समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. अदरवाइज आई एम अवेलेबल टू आंसर एनी क्वेरी स्पेसिफिकली ऑन charm. Absolutely right, Amit ji. And by the way, all these techniques individually also can impact. If you use the Bij mantra separately, Yes. you use the color separately, you just use the affirmation separately, all these have individual impact also. So we are using that as a composite package so that you get a holistic image and a holistic benefit of it, right? So you don't have to worry. And if your calling is for one particular thing, go ahead with that. अगर आपको लगता है कि बीज मंत्र ही सुनना है मेरे को, तो आप शवासन में लेट के बीज मंत्र सुनते रहिए. 21 मिनट का वीडियो है, वो सुन लीजिए, उसी से हीलिंग हो जाएगी. That is not a problem. You just focus on the position, imagine or visualize the orange color there. अगर sacral chakra का कर रहे हैं, है? तो do whatever is your calling and you will definitely get the benefit. क्योंकि इसमें ना होने का कोई मतलब ही नहीं है. बाकी बस सिर्फ इतना है कि अगर आपको आपके ब्लॉक्स अगर पहाड़ जैसे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कंकड़ जैसे हैं तो जल्दी ब्लॉक हट जाएगा. So you have to understand it that way. Keep doing it and you will experience the benefits of healing. Yes. All right, very good. And by the way, just one more thing, we are doing this one chakra per week, but that doesn't mean you do only one chakra. All the 7 chakras has to be done. क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सोर्स कहाँ है. कभी वो जहाँ दिख रहा है लाइफ में हो सकता है वो सोलर चक्रा में दिख रहा हो, लेकिन उसका कॉज जो है वो रूट चक्रा में होगा. Right, so that is why we say you should heal all the 7 major chakras periodically, regularly, continuously, right? तो 21 मिनट का जो वीडियो है जो YouTube में है वो आप लगाइए. 3-3 मिनट में 7 चक्रास की हीलिंग है, वो करिए, और 3 मिनट में आपको मंत्र भी सुनाई देगा, म्यूजिक भी सुनाई देगा, एफर्मेशन आप मन में बोल सकते हैं, और बीज मंत्र आपको वो भी आपको म्यूजिक में सुनाई देगा. तो दिस इज अ वेरी पावरफुल वे ऑफ हीलिंग. एंड once you start practicing it, you will see the difference, and then you can come here and share. If you have any doubts or any questions, we are here to always guide you and suggest you the steps going forward. Yes. All right. So with this, we are coming to the end of the session. It is 10 o'clock. Exact 10 o'clock now. So let me have last sharing from anyone who would like to do that, or any questions that you have. Last and final call. Yes. कौन बोलना चाहेंगे? इसने कुछ नहीं बोला आज. ज्योति जी, तरुण, anything you want to share? And of course our guests, Ashutosh, Aman ji, Dakshi, and P. Yes. कोई सवाल हो, कुछ शेयर करना चाह रहे हो? How was the session for today? What is the takeaway? क्या लेके जा रहे हैं? Anyone? Yes, मतलब आई गेट सब साइलेंट ही हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार लोगों को शुरू में लगता है कि ये यार ऐसे करने से कैसे चीजें ठीक हो जाएंगी. मतलब दिस वाज माय स्टेट आल्सो इन द बिगनिंग. यार ये बैठो म्यूजिक सुनो या चम करो या हीलिंग करो, कैसे ये चीजें बन जाती है, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा विद योर परमिशन सर. मतलब जवाब आपके पास है,
Yeah, I'm sure that you know it, but yeah, initially it may sound like a struggling phase to believe in it. दो चीजें यहाँ पे, globally millions of people today also, और अगर हम पास्ट पिछले 20-30 सालों की या हजारों सालों की हिस्ट्री उठाएंगे तो millions of people have found benefit out of this. और इन millions of people में बहुत पहुंचे हुए educated doctors, engineers, scientists, lawyers, CA, scientists सभी लोग हैं. अगर आप गूगल या चैट जीपीटी पे लिखेंगे one of the best doctors and scientists etc they have found the benefit of it. And chakra meditation is also being taught in FBI, CIA agents. अगर आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा थर्ड आई मेडिटेशन सिखाया जाता है FBI एजेंट्स को, CIA एजेंट्स को. क्लासिफाइड टेप्स हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिटेशन सिखा रहे हैं कुछ तरीके से ताकि उनकी इंट्यूटिव पावर डेवलप हो फॉर स्पाइंग बेटर फॉर एग्जांपल. और दूसरी चीज, इस चीज में ना 100% बिलीव करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट. अगर हल्का सा भी डाउट है तो सॉरी टू से ये काम नहीं करेगा. तो 1 मिनट के लिए या 1 साल के लिए इस पे ब्लाइंड बिलीव करके एक्सपेरिमेंट करके ही देख लें, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत पहुंचे लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है. तो मैं सोचता हूँ कि हम पागल नहीं है, हम गधे के बच्चे नहीं, हम क्यों नहीं बेनिफिट उठाए, हम भी उठाएंगे. तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी कि अगर इन लोगों ने फायदा उठाया तो मैं पीछे नहीं रहूंगा. एंड देन इट अफेक्टेड मी एंड देन मैं खुद भी अभी स्टूडेंट फॉर लाइफ हमेशा रहूंगा, सीख रहा हूँ, पर ये जरूर सीख गया हूँ कि इट वर्क्स और बहुत लोगों ने फायदा उठाया. एंड इंटेंशन बिलीव बहुत जरूरी है. अगर हल्का सा भी डाउट है तो मोस्ट प्रोबेबली ये काम नहीं करेगा. हाँ तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि इनिशियल स्टेट एवरीबॉडी कम्स थ्रू दिस. ये मेरे लिए आज बड़ी इंफॉर्मेशन थी कि एफबीआई में ये ट्रेनिंग भी दी जाती है एंड दिस इज हाउ दिस हैज बीन प्रैक्टिस. सो दिस इज समथिंग रियली न्यू टू मी, बट आई हैव सीन द मैजिक फ्रॉम द स्टेट. सॉरी, गूगल पे टाइप करना CIA मेडिटेशन. गॉट इट. सो फ्रॉम द स्टेट ऑफ कंप्लीटली ब्लॉक्ड कि इससे क्या होने वाला है यार. चल ये भी द मोमेंट यू, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट, बट that experiment also should be with the faith. So this is how I started personally. Even if I was not doing myself initially, I had taken help from Shashi sir for giving a distant healing, but the faith was there that somebody is there who is praying good for me, doing healing work for me. And when I started seeing the things shaping around me, I myself started doing this practice religiously, and every morning I begin my day with these practices. So thank you, Shashi ji, for this Very good. wonderful tool which you have shared in, and I am implementing in my life and experience that. So thank you very much. And of course, this wasn't possible without the push given by Amit ji, who introduced me to you. So I am in debt for you for this forever. No doubt. Welcome, welcome, Tarun ji. Thank you very much for trusting me and having faith in the divine. Yeah. Yes, Daksh, go ahead. I have a question for you guys. I just, first of all, hi to each and everyone attending this session. So I have a very small question that in last year or two, because the nature of my job is such that it becomes stressful at few points, as well as I've started experiencing backache. Although I'm taking doctor's advice and sometimes I also take physio. But is it related to chakras or is there a point which if I do chakra meditation more and is it that it will be taken care of through chakra meditation, or I'm not depending on it 110%, just 10-20% will it make a difference? Okay, so let me put it this way. Whatever is happening in your body and whatever is happening in your mind is reflected in the chakras as blocks. चाहे वो इस जन्म के कर्म हो, आपके जेनेटिक कर्मा हो या आपके पास्ट लाइफ कर्मा हो, they will all be reflected as blocks in your chakras. ठीक है. बॉडी और माइंड में क्या हो रहा है वो भी आपके चक्रास में दिखेगा. तो अगर आप अपने 7 मेजर चक्रास को हील करें, इट विल हील ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, karmic, financial, spiritual. It will impact your health, wealth, relationships. Your very existence on this planet Earth is governed by the health of the chakras. Right? अब आपने कहा स्ट्रेस कहाँ पे होता है? माइंड में, है ना? तो
वो हील होना ही है, वो हील होना ही है। और वो स्ट्रेस आया क्यों है? क्योंकि प्राण शक्ति जो है वो बॉडी के हर पार्ट्स में जा नहीं रही है, माइंड के हर सेल्स में जा नहीं रही है, राइट। तो एक बार बॉडी और माइंड हील होने लगेंगे और उनका कोऑर्डिनेशन सही हो जाएगा, व्हेन द फ्लो इज इन द प्राण शक्ति इज फ्लोइंग थ्रू दीज चक्रास इन फुल फ्लो। अभी तो आप मान के चलिए कि बूंद बूंद होके आ रहा है, छलनी जैसे बताया था ना, छलनी में इतना कचरा भरा हुआ है कि पानी को अगर माने, पानी आ ही नहीं रहा है, इट कमिंग लाइक ए ड्रॉपलेट्स। Once you heal that, it will come like a water flow, and then you see the abundance in your life. Correct? More you want to connect, you can definitely connect with me one-on-one, and I can do a aura feedback for you, the health of your chakras I can tell you, and based on that you can take a decision whether you want to go ahead. Because अगर चक्रास बहुत ज़्यादा blocks हैं तो वो जैसे अभी अमित जी ने बताया, it might take a very long time for you. So we have other modalities which are very, very fast, like Vedic healing is there, correct? Pranic healing is there, Reiki healing is there, quantum healing is there. So all these, there are healing techniques which a qualified healer, and I've been doing this for more than 25 years now, right? So they can do that in maybe 2 months or 3 months of healing. Your chakras can be completely free from all the blocks. And once that blocks are cleared, then you can practice your method so that you keep on recharging it and cleansing it and healing it and activating it, energizing it. All that can be done. तो एक बार पूरा पहाड़ जो है वो हट जाएगा, उसके बाद रेगुलर फ्लो में आप अपने प्रैक्टिस कर सकते, राइट? तो लुक एट इट दैट वे, एंड whatever is happening in your life can be impacted by the healing of your chakras. Yes, so I hope I have answered you. Yes, all right, very good. Let's acknowledge the Daksh. Very good. Okay, Amit ji, you want to add something? No, it's just that कि एक बार और ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि only working on the chakras is not the treatment. So आपका ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोलॉजी में जो भी ट्रीटमेंट है वो तो पैरेलली होना ही मेडिकल चाहिए। ट्रीटमेंट करते रहिए, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट विल बी डन ओनली फॉर द बॉडी। ये स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, दिस विल हैव इम्पैक्ट बॉडी, माइंड, and at your karmic level and at your spiritual level, right? Yeah. So And that is why it is important. And I think रूट चक्रा मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द हेल्थ के सभी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर लोकेशन जैसे थ्रोट चक्र है, इसके ब्लॉक होने से हमारे कंधों में भी चैलेंज हो सकता है, बिकॉज इट इज फिजिकली क्लोज टू द थ्रोट चक्र। लाइकवाइज हार्ट अगर ब्लॉक्ड है तो हमें लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकती है अगर हार्ट से रिलेटेड है, तो फिजिकली भी इफेक्ट पड़ता है एक पर्टिकुलर चक्र का टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। Yes. Aman had a question. Yes, sir. Go ahead. Actually, I, other than the chakra thing, I just wanted to advise Daksh, because I heard that he has a lot of backache problem. I had a similar backache problem. I went to a lot of orthopedics 20 years back, and the only thing which could give me some relief was the yoga asana, particularly for backache. So just a piece of advice that he can actually look for some yoga asanas for backache. Thank you. Nice. Yeah, but the only precaution you need to take is, if you are having a backache, then you should not do any yogasana. First, get rid of that, and then you can do these practice asana postures so that you don't get it back, or you can improve upon that. है ना? क्योंकि अगर बैकएक हो रहा है तो आप उसमें बेंडिंग स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएंगे, करेक्ट? So you have to take some precautions. Follow. Don't just blindly go and do some asanas. It will hurt you more. तो किसी एक प्रैक्टिसिंग योगा टीचर को मिल के उनको बताइए ये है, वो धीरे धीरे आपको जहाँ पे आप हैं, जिस लेवल पे आप हैं, वहाँ से आपको कराएंगे, एंड इट विल बी फाइन। दैट I've been teaching yoga for the last 30 years. Yeah, I still do yoga for in the morning for about 2 hours. So if you have any problem, you can have a one-to-one with me. I can guide. Yeah, no problem. All right, very good, very good. Let's acknowledge Aman and Daksh. Okay, great. Right. Anybody else who wants to share anything or ask something? Nahi, then I've already stretched it by more than 11 minutes, so I will close the session now. Thank you very much for your participation, and I hope this was valuable to all of you. So
Thank you very much. Enjoy a great week, and we Thank come you, back sir. again for the next week, and we will look at the solar chakra healing in the next session. Till then, enjoy your life. Take care. Aham Brahmasmi. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, everyone.